OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. In the last segment of this chapter that we are discussing, reproduction in organisms, we had discussed about the pre-fertilization events, right? We had discussed कि fertilization से पहले कौन-कौन से events होना ज़रूरी हैं to accomplish fertilization. So we had discussed कि gametes का बनना ज़रूरी है and then they have to be transferred, right? So the meeting of the gametes or the transfer of one gamete to reach the other gamete is also necessary before fertilization. Today we are going to talk about the event of fertilization. Alright, when we are going to study about fertilization, we are going to basically deal with two terms. We will be studying about syngamy and then about fertilization. Further, we are going to discuss about the modes of fertilization. And lastly, about a very interesting phenomena which is called as parthenogenesis. So I hope you are ready to study about fertilization. Let us begin. So syngamy and fertilization. Now these two terms, they are in fact often used interchangeably. Like जब हम लोगों को fertilization के बारे में लिखना होता है तो हम लोग अक्सर उसे syngamy लिख देते हैं, right? But there is a slight difference between these two terms. Let me explain to you कि difference क्या है, but however you can use them interchangeably whenever you are writing your answers. तो देखो basically होता क्या है, the meiocytes, which are the germ mother cell, they undergo meiosis, right, to produce the gametes. So meiosis होगा and the gametes will be produced. So here I am drawing an egg or the ova as one gamete. Right? And then there is the sperm or the male gamete. Alright, so the meiocytes, they undergo meiosis to form the two gametes, right? Now let us talk about these two terms. So the male gamete is now motile, right? And it has been transferred close together to the female gamete, right? Now there will be fusion of the two gametes, right? So the fusion of the two gametes, this is termed as syngamy. Right? Gametic fusion, syngamy, right? And then further, when these two gametes have fused, the basic structure which needs to fuse in order to form the diploid zygote, right, which is the product of fertilization, is the fusion of the nuclei. So there will also be fusion of nuclei of the two gametes. And this fusion of the nuclei of the gametes is actually termed as fertilization. Alright,
So I hope you have understood the difference between syngamy and fertilization. तो सिंगैमी में दोनों सेल्स फ्यूज होंगे और फर्टिलाइजेशन में स्पेसिफिकली हम लोग न्यूक्लियाई की बात करते हैं, राइट? However, you can use these terms interchangeably as I told you before, right? I hope you have understood this. Once fertilization has occurred, right, there will be the formation of zygote, and further the post-fertilization events are going to occur, which we will be discussing further on. However, let us come to now the modes of fertilization. So there are two modes of fertilization. There is the external mode of fertilization, or simply external fertilization, and there is the internal mode of fertilization, or simply internal fertilization. Now, what is meant by external fertilization and internal fertilization? देखो, जब हम लोगों ने बात करी थी अबाउट व्हाट द रिक्वायरमेंट्स आर ऑफ गैमीट ट्रांसफर, तो हम लोगों ने बात करी थी मीडियम की. एंड आई हैड टोल्ड यू देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स इन विच द वाटर इज द रिक्वायर्ड मीडियम. वाटर में ही गैमीट्स फ्यूज होते हैं या गैमीटिक ट्रांसफर होता है. व्हाट आई मेंट देयर वाज कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, फ्यूजन होता है गैमीट्स का या न्यूक्लियाई का, वो एक्चुअली एक्सटर्नल मीडियम में ही होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर आर सर्टेन एम्फीबियंस, राइट? You already know that frog and fishes, they lay their eggs and subsequently the male fertilizes the egg, right? So all this happens in the external medium, which is water. Apart from that, there are algae also which undergo external fertilization. So external fertilization में जो gametes होते हैं ना, they are basically liberated into the external medium by the male as well as the females in large numbers, right? And then subsequently उनका वहीं पे fertilization हो जाता है in the external medium, right? And they start forming the zygote, right? अब देखो यहाँ पे the liberation of male and female gametes is in large numbers. Can you guess why it is in large numbers? Because external fertilization की एक disadvantage है. All these gametes which will form the zygote and further offspring का development होगा, तो offspring will be in the environment of a predator, right? So the predators, they threaten the survival of this newly formed zygote, and that is why इतना risk होता है. So to compensate that risk, there are a large number of gametes which are produced. अब देखो external fertilization में we can also say कि contact होना जरूरी नहीं है between the male sex organism and the female sexual organism, right? Gametic transfer and gametic contact is important, right? तो काफी बार ऐसा होता है, the fishes, the females, they lay their eggs and subsequently the males will lay their sperms and the sperms will be able to swim to the eggs and fertilize them, right? After the fertilization of egg, still they may be threatened by predators, right? Again, तो large numbers में ये सारे ही gametes produce होंगे. However, there is almost nil contact between the female fish as well as the male fish, right? क्योंकि as such contact की जरूरत है नहीं, right? Okay, now let us move on to internal fertilization. अब internal fertilization में क्या होता है कि fertilization होता है inside the body of an organism, which is generally the female, as you all know. अब internal fertilization में sperm must be motile, or the male gamete must be motile so that it can reach into the body of the female and then it might be able to fertilize the female gamete, right? So इस case में internal fertilization के case में the female gamete in fact are less in number, right? Because actually ये short method है. अगर female gamete is present in the female reproductive tract, right, and the male gamete is entering the female reproductive tract, then it is somewhat a sure method of reproduction or rather fertilization, right? Surely fertilization हो पाएगा अगर the sperm or the male gamete is able to reach the female gamete, right? So the number of the female gametes is much less, right? However, the male gamete are again produced in larger numbers to compensate their loss, कि जितना भी loss होगा in traveling from the male to the female organism, उस loss को compensate करने के लिए again the male gametes are much more in number, right?
सो अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या डिफरेंस है एंड गैमीट्स में क्या डिफरेंस है. Even in the external medium, the gametes will be different from the ones which are undergoing internal fertilization. Right? I hope you have understood both of these. अच्छा, अब ये तो बात हो गई normal, external, internal. We have talked about how in plants also as well as in animals also external and internal is taking place. But you have also studied about flowering plants. Right? उसमें जो pollen grain होता है उसको भी transfer की जरूरत होती है. But once it reaches the stigma, is the pollen grain motile? No, it is not motile. तो उसका ट्रांसफर कैसे होगा? अगेन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल पिस्टल के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन, राइट? बट हाउ विल द पोलन ग्रेन विच इज नॉन मोटाइल एक्चुअली रीच द पिस्टल और रीच द ओवरी? इट विल रीच थ्रू अ पोलन ट्यूब, राइट? तो अब देखो कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा डेवलप कर लिया है ऑर्गेनिजम्स में. सो दीज आर द टू मोड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. वी कैन सिंपली से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द एक्सटर्नल मीडियम एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. अब इसमें डिफरेंस क्या है? सी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? द गैमीट्स दे आर लिबरेटेड इनटू द एक्सटर्नल मीडियम and they find their way to one another and cause the fertilization. However, it is not a sure method of fertilization क्योंकि obviously बात है जब the female are going to lay their egg, it depends कि male will be able to liberate the gametes or not, the gametes will be able to reach the egg or not. So right, it is not a sure method of fertilization. As well as अगर fertilization हो भी जाता है, so because the developing zygote or the egg, the fertilized egg is in an external medium, so it is always threatened by predators, right? तो अब इसको compensate करने के लिए क्या करें? In external fertilization, the gametes produced are in large numbers. तो बहुत सारे gametes एक ही टाइम पे liberate किए जाएंगे, right? And बहुत सारे इसमें gametes ऐसे भी होंगे which will be eaten up by the predators, will not undergo fertilization, successful नहीं होंगे in producing zygote, right? So to compensate all these losses, बहुत सारे gametes external medium में liberate किए जाते हैं by the male as well as the female, right? When we talk about internal fertilization on the other hand, यहाँ पे generally organism के अंदर which is the female, generally female के अंदर fertilization होता है, right? तो female produce करती है ova और the egg, right? तो क्योंकि ova और egg are in a safe environment inside the female reproductive system, right? That is why the number of ova or the egg produced is very less, right? So even one ova will be able to be fertilized अगर वहां तक male gamete पहुंच जाता है, right? तो यहाँ पे internal में the ova produced are much less in number, whereas the male gamete which has to travel through to reach the female reproductive system and then fertilize the female gamete, they are again produced in large numbers क्योंकि बहुत सारे losses होंगे और उन्हीं को compensate करने के लिए they have to be produced in large numbers, right? Internal fertilization में obviously ये भी important है कि male gamete motile होना चाहिए, right? It should be able to locomote so that it can reach up to the female gamete. जैसे हम लोग ह्यूमंस का ही एग्जाम्पल ले लें, हम ह्यूमंस के में भी द फीमेल प्रोड्यूसेस द एग व्हिच रिमेन्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, राइट? एंड द स्पर्म्स once they are ejected through the vagina, they reach into the cervix, they reach into the uterus, and then they have to travel, they have to swim through to reach the egg and fertilize it. तो इस प्रोसेस में भी काफी सारे लॉसेस होते हैं of the sperms, and that is why they are produced in large numbers, right? However, internal fertilization as compared to external fertilization is a sure shot method. It is almost sure कि fertilization हो जाएगा if the egg and the sperm are able to meet, right? Are able to be transferred to the female reproductive system. I hope this is clear to you. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम लोग देखते हैं बहुत सारे एम्फीबियंस में, फ्रॉग्स में देखते हैं, फिशेस में देखते हैं, दे ले देयर एग्स आउटसाइड एंड देन इट इज आउटसाइड ओनली फर्टिलाइज्ड. तो एक्सटर्नल में क्योंकि फर्टिलाइजेशन इज अकरिंग ऑफ द गैमीट्स इन द एक्सटर्नल मीडियम, समटाइम्स इट इज नॉट इवन नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनिजम्स टू मेक कॉन्टैक्ट, राइट? लेकिन जब हम लोग इंटरनल की बात करते हैं, इंटरनल जैसे कि मैमल्स में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, बर्ड्स में होता है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट जरूरी है बिटवीन द फीमेल एंड द मेल ऑर्गेनिज्म,
क्योंकि कॉन्टैक्ट और स्पेशल मैकेनिज्म डेवलप होता है so that there is transfer of the gametes from the male system to the female system, right? So there are special organs या फिर special complex mechanism for that transference, right? तो अगर transfer होना है, there has to be contact between the male and the female. So these are the basic differences between external and internal modes of fertilization. I hope you have understood this. Now we are going to move on to parthenogenesis, which is another interesting phenomena which you are going to study under fertilization. Alright, let us now go further and study about an interesting phenomena which is known as parthenogenesis. Alright, अगर हम इसी वर्ड को दो में ब्रेक करें ना, तो पार्थेनोस here it means virgin, right? And genesis means birth. So parthenogenesis is in fact often called virgin birth. अब virgin birth का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो egg produce होता है या ova produce होता है ना, it can develop into offspring without being fertilized, right? So basically parthenogenesis is the development of ova or the egg into its offspring without fertilization. राइट अब देखो हम लोग इसको अंडर फर्टिलाइजेशन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इफ आई वर टू टेल यू और इफ आई वर टू आस्क यू कि पार्थेनोजेनेसिस तुम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में का पार्ट लोगे या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट लोगे, व्हाट विल बी योर आंसर? See, there can be difference or variations in your answer also. Well, let me explain to you how I think of it. Parthenogenesis में क्योंकि fertilization नहीं हो रहा है, तो we cannot say basically it is sexual mode of reproduction, right? क्योंकि variations नहीं आएंगे, वो जो कि root होता है actually sexual reproduction का. But it is also involving a gamete, right? Ova या egg ही actually offspring बना रहा है, which is not the case in asexual reproduction. So we can say it is partial asexual reproduction or partial sexual reproduction. That is what I think. And you can also write down your answers accordingly as to what you think it should be and what is the reason for it. Alright. Now let us talk about what is parthenogenesis in terms of its two types. देखो ये तो समझ में आ गया, it is the development of ova or egg into offspring without fertilization. बट ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि अभी फर्टिलाइजेशन से ही जाइगोट बनता है एंड देन इट अंडरगोज ग्रोथ, राइट? तो बिना फर्टिलाइजेशन के हाउ कैन इट डेवलप इनटू एन एग, राइट? तो पार्थेनोजेनेसिस भी दो टाइप का होता है. इट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. ऑलराइट, जब हम लोग नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं ऐसे टाइप के पार्थेनोजेनेसिस की जो नेचुरल एनवायरनमेंट में होता आया है, राइट? देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स व्हिच नेचुरली अंडरगो पार्थेनोजेनेसिस, राइट? आई गिव यू एन एग्जांपल. देखो यहाँ पर वी ऑलरेडी नो अबाउट रोटिफर्स, वी नो अबाउट एफिड्स. लिजर्ड्स के बारे में तुम जानते हो. लिजर्ड की एक स्पीशीज होती है by the name of Lacerta saxicola americana, right? This particular species has only females as its members, right? इनमें कोई भी मेल नहीं होता है, तो obvious सी बात है there will be no fusion of gametes क्योंकि मेल गैमीट ही नहीं बनेगा, right? तो इसके केस में natural and complete parthenogenesis होता है क्योंकि इनकी complete life cycle में ही सिर्फ parthenogenesis है. तो बार बार फीमेल्स ओवा या एग प्रोड्यूस करते हैं एंड विदाउट getting fertilized it develops into the offspring which is through the process of parthenogenesis, right? So one of the examples of lizard we can write in natural, right? Another example that I can give you of natural method of parthenogenesis which occurs in the environment naturally is that of bees.
अब बीज के बारे में तुमने सुना होगा, इनकी कॉलोनी होती है, दे आर सोशल एनिमल्स विच हैव डिफरेंट कास्ट्स, राइट। इनमें एक कास्ट होती है विच आर द मेल्स, वी कॉल देम एज ड्रोन्स, राइट। तो ये जो ड्रोन्स होते हैं वो भी पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू ही डेवलप होते हैं। द डिफरेंस इज कि लिजर्ड में कोई मेल था ही नहीं, सारे फीमेल्स प्रोड्यूस हो रहे थे एंड दे वर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग। बीज में क्या होता है, एग्स प्रोड्यूस होते हैं, सम ऑफ देम गेट फर्टिलाइज्ड, दे प्रोड्यूस अदर कास्ट जैसे कि क्वीन हो गया या फिर सोल्जर्स हो गए, whereas the unfertilized egg also develop into offspring through the process of parthenogenesis, but वो एक different caste बनाते हैं, that of male drones, right? I hope you have understood this. तो इस केस में वो complete life cycle नहीं हुआ, वो incomplete parthenogenesis हुआ, ठीक है, क्योंकि parthenogenesis भी हो रहा है लाइफ साइकिल में और fertilization के थ्रू भी offsprings produce हो रहे हैं, right? So I'll just write over here, drone bees are another example. ठीक है ना? I hope you have understood this. अब आ जाते हैं artificial method. Artificial से नाम से ही पता चल रहा है, this is done by human beings, human intervention से होता है, and this can be done, ये actually carry out किया गया है and then देखा गया है कि बहुत सारे organisms में we can artificially induce parthenogenesis. How? By giving them shock, by pricking the egg with a glass needle, ये भी देखा गया है. We can apply certain chemicals जैसे कि weak organic acids या फिर salt solutions apply करने से, brine solution apply करने से. All this has been seen to induce parthenogenesis in some of the species. जैसे कि हम लोगों ने birds में turkey और hen में ये किया हुआ है. We have done it in snakes, right? So there are several species in which artificial parthenogenesis can be induced by changing certain conditions of the egg, right? And यहाँ पे human intervention is necessary. So I hope you have understood कि parthenogenesis होता कैसे है and क्या होता है basically. अब आ जाते हैं कि parthenogenesis का फायदा क्या है, right? Parthenogenesis, how is it important for species? तो देखो, सबसे पहला फायदा तो ये है कि एग या ओवा फर्टिलाइज हो ना हो, it will develop into an offspring. So there is less of wastage of the gametes which are produced. ठीक है, अगर एक बार गैमीट प्रोड्यूस हो गया है, स्पेशली इन इनकम्प्लीट, राइट, तो अगर वो फर्टिलाइज नहीं भी हो रहा है, इट विल डेवलप इनटू अ ड्रोन बी, राइट, तो कोई भी वेस्टेज नहीं होगा गैमीट्स का. दूसरी चीज ये है कि जो भी म्यूटेशन के थ्रू या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी ऑर्गेनिज्म में है, राइट, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू चेंज हो सकती है, वेरिएशंस आ सकते हैं उसमें. लेकिन जब वो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू नए ऑफस्प्रिंग में जाएगी, देयर विल बी नो वेरिएशंस. सो जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में था कि प्रिजर्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहा था फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, पार्थेनोजेनेसिस में भी देयर विल बी प्रिजर्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द next. I hope this is clear to you, right? This is all for the events of fertilization. Now we'll meet again and discuss about post fertilization events, fertilization के बाद जो events होते हैं. Till then, revise all this and stay tuned. Thank you.